So the Prestige electric kettle comes in a box like this. If you guys have any doubt about this brand called Prestige, then let me tell you one thing. Prestige के काफ़ी appliances बहुत ज़्यादा famous है and घर घर में use किए जाते हैं. So they sell their cookers. They also have their mixture grinders, cookware. काफ़ी ज़्यादा आपको cookers देखने को मिलेंगे, काफ़ी popular होते हैं Prestige brand के. So you can trust this brand. So before I will talk about the features of this electric kettle, I will talk about the price of this kettle, which is very affordable and cost effective compared to other kettles. तो अगर आप बाकी kettles देखोगे जैसे कि Philips की, तो Philips की kettle काफ़ी ज़्यादा expensive होती है. So this cost me around 800 rupees और जो इसकी retail price है that is 1145. Alright, so now I will show you कि what actually comes in the box. तो बॉक्स में सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ द केटल. दिस इज़ द मॉडल ऑफ द केटल. यहाँ पे प्रेस्टीज का लोगो आप देख सकते हो एंड आई थिंक द मॉडल इज़ क्वाइट एलिगेंट एंड ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है. इसके साथ साथ जो ये नीचे वाला एरिया है दैट इज़ ऑफ प्लास्टिक एंड ये ऊपर का जो कैप है दैट इज़ ऑल्सो प्लास्टिक एंड जो ये पूरा पोर्शन है दैट इज़ ऑफ मेटल. दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ सेफ टू यूज़ इट एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी ईजी टू यूज़ इट. So the other thing that comes with this kettle is this plate which also is joined by a plug. तो ये जो plug है इसके थ्रू आप इस kettle को ऑपरेट कर सकते हो. So guys, जो ये प्लेट है मेक श्योर कि आप जब भी इसे यूज़ करो केटल को तो जो पानी है वो इस सरफेस पे ना आए, अदरवाइज हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए या केटल ख़राब हो जाए विच यू डोंट वांट टू. सो मेक श्योर कि जब भी आप इसे यूज़ करो तो ये पोर्शन हमेशा क्लीन रहे एंड यहाँ पे पानी ना आए. So there is this notice which is mentioned behind the back of this plate that I will read out. So it says don't wash the product with water. If the product was cropped by water, dry it immediately. Dry it by hair dryer before use, or you can also clean it by a cloth. And don't let the child play with it. Then this is very important, guys. So if you are having this question in your mind कि how to clean this electric kettle, then please guys इसे कभी भी धोना मत पानी से, और अगर धो भी दिया है तो make sure कि अच्छे से dry हो जाए तभी आप इसे use करो. But if you are someone who is very lazy, then you don't need to wash it. तो उसकी जगह आप एक वेट क्लॉथ या फिर एक ड्राई क्लॉथ ले सकते हो, उसे अच्छे से वाइप करके अंदर भी और बाहर भी अच्छे से साफ कर सकते हो. दैट इज़ इट. बट मेक श्योर कि हमेशा ड्राई हो और क्लीन हो. ऑल्सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग दिस केटल फॉर मेकिंग मैगी और टी और coffee, which I think is not good because as the product mentions कि अगर आप इस प्रोडक्ट में कोई और चीज़ बनाते हो other than water, then वो जो ब्रांड है वो आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये प्रोडक्ट कितने टाइम तक चले. हो सकता है कि ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाए. तो if you guys don't want to spoil this product, if you don't want it to get ruined, then please make sure कि इसमें आप टी ना बनाएं, कॉफ़ी ना बनाएं, मैगी ना बनाएं. It is just only for the use of water. So this plate is very light, guys. ये बहुत ही light है और इसके ऊपर आपको kettle को रखना होगा and then you should operate this kettle. तो जो kettle है इसका जो cap है that opens like this. All you need to do is press it और ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा. Also there is this button जो on off के लिए है. इसी से kettle on होगा और off होगा. Also there is this power indicator which glows when the power is on. तो ये मैं आपको दिखाऊंगी इसे यूज़ करके, तब आप देख पाओगे इसे. If you guys want to know कि इस electric kettle में कितना पानी आ सकता है, तो it has 1.5 liter of capacity. Talking about the time this kettle takes to heat the water, it takes approximately 30 to 45 seconds to heat the water. पर अगर आपने बहुत ही कम पानी डाला है तो हो सकता है कि बहुत जल्दी गर्म भी हो जाए. तो वो डिपेंड करता है आपने पानी कितना डाला है उस पर. So बहुत हो गया and now it is time that I will show you guys how to operate this kettle and how to use it, which is very easy. So just watch this video till end and you will learn how to use this kettle. So मैंने इस kettle में पानी भर दिया है and it is full now. काफ़ी heavy हो गई है. So if you guys want to know how to use it, then keep watching.
the link to this electric kettle in my description box below. So if you guys are planning to buy this kettle, तो आप जाके Amazon पे देख सकते हैं. And with that being said, I will end this video here. If you